Hello everyone. Welcome to the platform of Sathi IAS. Dear students and viewers, in my previous video, I have told you about the importance of GC Leong in your IAS preparation journey. We are hereby starting our videos covering the syllabus of GS Geography from the very important book that is GC Leong. So stay tuned with Sathi IAS to get into the detail given by GC Leong in the certificate Physical and Human Geography book. प्यारे बच्चों, मैं पूनम शर्मा आपकी टीचर आप सबके साथ एक बार फिर से इस वीडियो के जरिए आप सबके साथ मुलाकात कर रही हूं, जहां हम चैप्टर 1 द अर्थ एंड यूनिवर्स की शुरुआत आज से करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपकी इन कंसेप्ट्स क्लैरिटी में आपकी मदद कर पाऊंगी। हम छोटे से छोटा कंसेप्ट जो है जो आपकी किताब जीसी लियोंग में दिया गया है उसको पढ़ने की उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे और अंत तक बने रहे इस वीडियो के साथ अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स की जानकारी लेनी है। तो आइए चलते हैं अर्थ एंड यूनिवर्स के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा यूनिवर्स यानी कि हमारे ब्रह्मांड के साथ रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, हम सब ने सुना है कि यूनिवर्स जो है उसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही अनोखी है। इसकी बनने की प्रक्रिया, हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अगर हम किसी थ्योरी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं तो वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसके जरिए हम यूनिवर्स की फॉर्मेशन को एक क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक क्रेडिटल बिग बैंग थ्योरी एक मोस्ट क्रेडिबल थ्योरी है जो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है। इस यूनिवर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस को इस बिग बैंग थ्योरी में डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो आइए नजर डालते हैं बिग बैंग थ्योरी की तरफ, जो कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। अगर हम जीसी लियोंग की बात करें तो आपके इस फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, दैट इज द अर्थ एंड द यूनिवर्स, जिसका फर्स्ट कंटेंट पॉइंट एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स है, उसमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन जब हम एनसीईआरटीज की तरफ नजर डालते हैं तो वहां बिग बैंग थ्योरी और इसके साथ साथ नेबुलर हाइपोथेसिस और ना जाने और कितने प्रोसेसेस फॉर्मेशन और ना जाने कितने फॉर्मेशंस को डिस्क्राइब किया गया है जो स्टार, मून, अर्थ की फॉर्मेशंस को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जीसी लियोंग में आपको आपकी जो शुरुआत है वो प्लैनेट्स के साथ की गई है, सोलर सिस्टम के साथ की गई है। यूनिवर्स फॉर्मेशन को उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो यूनिवर्स की फॉर्मेशन के लिए हम एनसीईआरटीज को कंसल्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारी यूनिवर्स के पार्ट्स हैं, जैसे कि गैलेक्सीज, जैसे कि सन, और हमारी जो अर्थ की स्फेरिकल शेप क्यों है, इन सब के लिए हम जीसी लियोंग को टच करेंगे। तो अगर हम दोनों बुक्स को साइड बाय साइड बैलेंस वे में अगर पढ़ना स्टार्ट कर दें तो हमारे सारे टॉपिक्स एनसीईआरटीज और जीसी लियोंग के जरिए कवर हो जाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी एंड व्हाट इट स्टेट्स अबाउट, ताकि हम जो आने वाले कंसेप्ट्स हैं, यूनिवर्स के जो पार्ट्स मैं कहूंगी, उनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। Origin of universe is explained by the Big Bang theory I told you. And according to this theory, all the universe started from a small dot. All the universe started from this small dot. This tiny structure, that is the dot, it is believed to have been infinite hotness, infinite heat, as well as it was dense and it was of very it was too much hot as well as dense. Its density was infinite and its hotness was infinite. And this small dot began expanding like a balloon after a supposed massive blast known popularly as the Big Bang. We are assuming that
This small dot, it was having infinite hotness and it was having infinite density. And as we blow a balloon, this was started up blowing up with some energies, and this undertook a blast which leads to a big bang, means a big blast took place. This theory was proposed in, it is meant that this theory was proposed in 1931 by Abbe Lemaitre, and he was a Belgian priest, astronomer, and the professor of physics at the Catholic University of Leuven. It was, I am again repeating, that it was proposed in 1931 by Abbe Lemaitre. By Abbe Lemaitre, he was an astronomer and the professor of physics at the Catholic University. At Catholic University of Leuven. Right? So, although the reason for the blast remain unknown. Now, if there is a blast, there must be some reasons behind it. So, the reasons for the blast are still unknown, but it is widely believed that ever since the huge blast, the universe has been gradually and continuously expanding. And after expansion, this cooled down. Firstly, it was hot, it undertook a blast, and after blast, it started cooling down, leading to the formation of various atoms. And after that, atom was formed, various atoms which have combined in different ways to form the stars, to form the galaxies of today's universe. I think you have made a picture in your mind that how was the universe created. I'm just giving you the idea about that it was created. The most credible theory was Big Bang theory. Theory was given in the year 1931 by Abbe Lemaitre. He was a Catholic. He studied from Catholic universities at Leuven. He was a professor of physics, and the reason is still unknown. And when the blast took place, all the material that came out was cooled down, and later small atoms were formed, and after that galaxies and stars were formed. This is the idea, this is the picture of formation of the universe, that hence the formation took place and hence the universe existed. Universe was formed. Now I will show you through this slide that how it was created. Universe is all of a space and time and their contents, like including planets, stars, galaxies, and all other forms of matter and energy. The Big Bang event is a physical theory that describes how the universe expanded, I told you, from an initial state of high density and temperature. This was that small dot that was having high density and high temperature. In this way, the Big Bang took place and the universe was formed. Now, just have a look over the words mentioned here. When the universe began, it was just hot and tiny particle mixed with light and energy. It was nothing like what we see now. As everything expanded and took up more space, it cooled down. The tiny particles grouped together, they formed atoms, and then they cooled down to form together to form stars and galaxies. The first stars created bigger atoms and group of atoms that led to the more stars being born. At the same time, galaxies were crashing and grouping together as new stars were being born and dying. Then things like asteroids, comets, planets, and black holes were formed. So this was a step by step, how the universe took place, and after that, how the sun was formed, how the planets were formed, and after planets, we can say each planet was having its own moon, how the moon was formed, then the asteroids, then the comets. In this way, the process carries on, and the universe was completed in this way. Now, moving towards the next slide, what is being mentioned here, that what are the different parts under the universe? This is our universe. Then after comes the galaxies inside the universe.
Like then the solar system comes, and inside the solar system there comes planets, there come moons, there come asteroids, and there come comets. This is the inside of the universe. What is there inside? First comes the universe, then inside the universe is the galaxies, then is the solar system, then is the planets, and then on the planets we all, our countries, our states, our areas, and here we are sitting in this room and teaching you. This is all on the planets, and each planet is having its moon. They have asteroids that comes under the solar system, and then the comets comes under the solar system. This is the chain of under the universe. What is there inside the universe? A universe like this, and these are the small parts that comes under the universe. Now see the first point, that is under the universe we will take galaxies. What we will take? Galaxies. This is the picture of a galaxy, how it looks like. You can see that there is inside is the sun and it goes like this. And in this way we can say this is a galaxy. You can see from this picture here. A galaxy is what? A galaxy is what? Galaxy is actually a huge collection of gas. Galaxy is basically a huge collection of gas with the millions of stars. What I said, it's a huge collection of stars, billions of stars. A galaxy is what? It's a huge collection of gas, dust, and billions of stars and their solar system. Means inside the galaxy, what we are having? We are having gas, we are having dust, we are having billions of stars. They all comes under the galaxies, and thus they form the solar system. And how they are bound together? They are bound together with the very important force that is the gravitational force, with which force we are standing over the earth. That is the gravitational force. Gravitational force is holding together. A galaxy is held together by gravity. Now next fact is Andromeda is nearest galaxy to Milky Way. जैसे कि we all live here, हम सबके neighbors होते हैं, सराउंडिंग्स में we all have neighbor. वैसे ही हमारी जो गैलेक्सी है उसका कोई ना कोई नेबरिंग होगा, कोई ना कोई नेबरर होगा. तो वो जो नेबरर हमारी गैलेक्सी का नेबरर है, that is the Andromeda galaxy. That is a neighbor to our galaxy, which our galaxy is, and the name of our galaxy is the Milky Way galaxy, in which our solar system exists. जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है वो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी. और एंड्रोमीडा जो है वो हमारी गैलेक्सी की पड़ोसन है. क्या है? हमारी गैलेक्सी की पड़ोसन है, हमारी गैलेक्सी की नेबर है. देयर आर 100 बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे. हर एक गैलेक्सी के अंदर नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इट इज हैविंग 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स. सो दिस इज अबाउट गैलेक्सी. कि गैलेक्सी एक कलेक्शन है डस्ट की, गैस की और नंबर ऑफ स्टार्स की. गैलेक्सी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए जो है वो बाइंड होती है, और हमारी गैलेक्सी की जो नेबरिंग गैलेक्सी है वो है एंड्रोमीडा गैलेक्सी. और 100 बिलियन जो स्टार्स हैं वो एक गैलेक्सी के अंदर आते हैं. हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर आते हैं. तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि है सन. मुझे नहीं लगता आपको सन और स्टार के बीच में डिफरेंस बताने की कोई डिटेल में जरूरत है, क्योंकि ये क्लास 8 का क्वेश्चन है. बट फिर भी हम बता देंगे कि सन जो है वो एक स्टार है. आप सब जानते होंगे सन इज अ स्टार. और स्टार के साथ हमारे आते हैं प्लैनेट्स. क्या आता है? प्लैनेट्स आते हैं. स्टार जो है उनकी अपनी खुद की लाइट होती है. दे हैव देयर ओन लाइट. बट जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. वो कौन सी लाइट के जरिए लाइटन अप होते हैं? दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. उनके पास खुद की लाइट नहीं होती. कि हमारा स्टार और प्लैनेट्स में एक छोटे लेवल का डिफरेंस आ जाता है. और सन को हम एक स्टार कंसिडर करते हैं. सन एक स्टार है क्योंकि इसके पास अपनी खुद की लाइट है. जब हम सन के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो यहां मैं आपको सन के कुछ फैक्ट्स बताती हूँ. सन एक स्टार है, आप सब जानते हैं. एक मैसिव सेल्फ ल्यूमिनस मीन्स उसकी खुद की लाइट है. सेलेस्टियल बॉडी है ऑफ गैस दैट शाइन्स बाय रेडिएशन ड्राइव फ्रॉम इट्स इंटरनल एनर्जी रिसोर्सेज. मीन्स अगर ये हमारा सन है
तो इसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, जिसके जरिए ये क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। क्या करता है, लाइट को एमिट करता है फ्रॉम इट्स इंटरनल एनर्जी सोर्सेस। जो इसके इंटरनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके जरिए एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि हमें इसके आउटर सरफेस पर दिखती है। जो हमारे सन का आउटर सरफेस टेम्परेचर है, दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस, और ये 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है जैसे जैसे हम आउटर सरफेस से इंटीरियर की तरफ जाते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा सन है वो कितना हॉट मास है, कि जो इसका आउटर सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और जो इसका इनर सरफेस टेम्परेचर है दैट रीचेस अप टू 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस व्हेन वी विल गो इनसाइड द सन। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इट इज 300,000 टाइम्स एज बिग एज अर्थ। इसका जो साइज है वो अर्थ से 300 टाइम्स एज बिग एज अर्थ। इट इज 300 टाइम्स एज बिग एज अर्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट सन। ये एक सन एक स्टार है, ये एक सेलेस्टियल सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी है। इसका अपना एक मास है, इसका अपना टेम्परेचर है, और इनर सरफेस टेम्परेचर और आउटर सरफेस टेम्परेचर में हम डिफरेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट मूविंग स्लाइड इज लाइट ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? लाइट ईयर इज अ टाइम दैट लाइट टेक्स टू ट्रेवल इन 1 ईयर। एक साल में जो सन से निकलती हुई लाइट है फ्रॉम द फोटोस्फेयर ऑफ द सन, वो कितने समय में धरती पर पहुंचती है, उसे हम एक लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? 1 लाइट ईयर कहते हैं। जितने टाइम में वो एनर्जी जो है, वो लाइट जो है सरफेस पर पहुंचती है, सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंचती है। अब सूरज की किरणें, सूरज की जो लाइट है वो 8.3 मिनट्स लगाती है कहाँ आने पर, धरती पर पहुंचने में उससे 8.3 मिनट्स लग जाते हैं। मींस जो हमारे पास लाइट पहुंच रही है वो क्या है, पुरानी निकली है, उसके बाद किरणें और भी निकल रही हैं। ये हमें 8.3 मिनट्स पुरानी निकलती हुई लाइट देगी, क्योंकि इसको धरती पर पहुंचने में 8.3 मिनट्स लगेंगे to reach the earth. This means that sun is only 8.3 light minutes away from the earth. तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो 8.3 light minutes. Okay. So what is light year? Light year is the time light takes to travel in 1 year. एक साल में कितना समय लगाती है उसे हम light year कहते हैं. So now this is all about star, means sun as a star. Now comes to the point solar system. In the solar system, we all know that we have sun in the center and all planets revolves around the sun. सभी planets इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और ये हमारा sun है, right? और ये जो planets हैं एक elliptical path follow करते हैं, उनका अपना orbit है जिसपे ये surround करते हैं, जिसपे वो revolve करते हैं। इनके पास अपना एक orbit है, उस पे ही ये revolve करते हैं और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करते हैं, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। जब इलिप्टिकल पाथ की बात आती है तो हम इलिप्टिकल को इस तरह से कंसिडर करेंगे। आई एम नॉट सेइंग राउंड, आई एम सेइंग इलिप्टिकल। अब जब इलिप्टिकल की बात आएगी, जब अगर हमारे पास ये सन है और ये एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहे हैं हमारे प्लैनेट्स, तो क्या होगा, कुछ ऐसा टाइम होगा जब ये इससे दूर हो जाएंगे सन से और किसी टाइम पे नजदीक हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे नजदीक है और यहाँ पे दूर है, तो यही से कंसेप्ट बनाता है हमारा एपोजी, पेरिजी, एपहीलियन, पेरहीलियन। फाइन, तो ये कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जो यूनिवर्स के कंसेप्ट है उनको डिस्कस करते हैं। तो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टार, सन, एवरीथिंग बाउंड टू इट बाय ग्रेविटी। व्हाट आई सेड, आई मेंशनड यू, हर एक चीज किसके साथ बाउंड है, किस फोर्स के जरिए बाउंड है, ग्रेविटी के जरिए बाउंड है। और प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं, वी आर हैविंग मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून and the dwarf planets such as Pluto and the dwarf planet Pluto. This is called as a dwarf planet. And why it is considered as a dwarf planet?
This we will discuss later. Such as Pluto. Dozens of moons, millions of asteroids, comets, and meteoroids, they all come under the solar system. They all come under the solar system. So, solar system consists of sun, star, everything bound to it by the force of gravity, and all planets revolve around the sun in an elliptical orbit. So, moving towards the next, we are categorizing the planets into the two types. One is the terrestrial planets and the other is the Jovian planets. So there is a difference between the terrestrial and the Jovian planets. Terrestrial planets are those planets which are primarily composed of rock and metals, and they are considered as like Earth. How they are considered? They are considered as like Earth. They look like Earth. Because why they look like Earth? We will not say they all around having the same shape like Earth. We will say their structure is similar as Earth. What we will say? We will say the structure is similar like Earth. You can see from this gift that the structure is similar like Earth. That is why they are considered as the terrestrial planets. Means they are like Earth and they are composed of rocks and metals. This is about the terrestrial planets. Means they are also known as the inner planets. Terrestrial planets are the inner planets. Jovian are the outer planets. So why they are called as like Earth? I mentioned you here because their structure is similar to like that of Earth. That is why they are called as the like Earth planets. Moving towards the next slide. Moving towards the next slide. Terrestrial planets are made up of rocks, metals with a hard surface, making them different from other planets that lack a solid surface. Means other planets they don't have a solid surface, but these terrestrial planets they do have a solid surface. इनके पास solid surface है और Jovian planets के पास solid surface नहीं है. Terrestrial planets have a molten heavy metal core, few moons and landforms such as cliffs, valleys, volcanoes, and craters. So this is about the terrestrial planets. What they do have, they have a molten heavy metal core. Few moons they have landforms, valleys, volcanoes, and craters. Craters are the lakes. So moving towards the next slide, Jovian planets. These planets include Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. They are the Jovian planets. These planets have larger sizes and masses. इनका size और mass जो है वो terrestrial के comparison बड़ा है. Because you know Jupiter is the largest planet. उनके पास solid surface नहीं है. I told you this. And they are called gas giants because they are large and made mostly of gases. They are mostly made up of gases and they are too large. Small amount of rocky materials are only found deep in the cores of Jovian planets. What is that? Small amount of rocky materials. Very little amount of rocky material is found deep in the cores of Jovian planets. So this is about the Jovian planets and they are the gas giants of solar system. They are larger in size. I will explain one more time. They do not have solid surface like terrestrial planets and they include the Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So we discussed about terrestrial and the Jovian planets. This was all about universe origin and some facts about the planets, solar system, sun, planets, terrestrial planets, Jovian planets. This was all about today's discussion. Now in our next video, we will give you the answer for this question that why Pluto is considered as a dwarf planet. So stay tuned with Sathi IAS.